Welcome, folks. Today is about the excitement, the exuberance about the gold delivered to us by Neeraj Chopra, trained just as by the army. He was a naib subedar in the army. So a lot of money and effort spent by the Indian Army getting this achievement. Incredible to get the gold. Great efforts in a lot of athletes, whether it's the women's hockey. I thought that they deserve more credit than the men's hockey. Men's hockey got the gold, but they've always been a case of false dawns all these 40 years. The women's on the other side fought. They fought. I mean, who could have believed that? I mean, they lost the first 3 games to come back in the semis and playing for bronze. They were down 2-0 to come up 3-2. It's just a tragedy they lost. What about Aditya Chopra? I feel sorry for her. Of course I do. Though in golf it's all in her hands, and I'm sure that she's cursing herself and very angry with herself to have missed that. But what is not known is the fact that she had COVID, and because of that she lost 200 yards. Can you imagine if she had those 200 yards? Incredible. What do we have? Then we have all the wrestlers that got us the bronze and the silver, and Mirabai Chanu got us the silver in weightlifting. Incredible. More women, right? But and so what does the story say? I mean, this is an incredible headline in Hindustan Times. It's true. History cast in gold. True. While it's history called in cast in gold, this one makes no sense. In the Indian Express headline, gold rush. A gold rush was something that happened, if you remember, during the Commonwealth Games that were in Delhi. That was a gold rush. This is hardly but a gold rush. But having said that, they've done really well, far exceeded expectations. Though it should be tempered by this thought process. While we exult that our total gold medal tally so far in Olympics is 34, total 34. That, folks, is only 5, I think, more than Michael Phelps, and that is what should actually ring the reality bell. But what is the story about today? It's about this. Do you remember Gabbar Singh? He says after that people would get up and say, "So jao, nahi to Gabbar Singh aa jayega." Now my latest one is, जितने भी आप लोग हैं जिनको मेडल मिले हैं, भाई साहब अपने मेडल्स को संभाल के रखिए, नहीं तो दाढ़ी वाला बाबा और उनके जो साथी हैं जो उभर के आ रहे हैं सब जगह से, सब चीफ मिनिस्टर्स वगैरह, वो आपकी अकम्पलिशमेंट छीन के ले जाएंगे। दाढ़ी वाले बाबा तेरी मुट्ठी में क्या है? दाढ़ी वाले बाबा तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में भाई साहब है आपकी अकम्पलिशमेंट, आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों ने पसीना बहाया, अपनी कुर्बानियां दी हैं इस लेवल से जो मेडल लाने के लिए। पर दाढ़ी वाला बाबा आपका क्रेडिट ले रहा है, दाढ़ी वाला बाबा आपका क्रेडिट ले रहा है। सब जगह इतने obscene इश्तिहार जो नजर आ रहे हैं। Anyway, watch this tape that brings us home. It's by Rajiv Nigam. I think it's really up there and fun. Cheers. हमारी हॉकी टीम ने कमाल कर दिखाया, एकदम ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई। उसके बाद हमारे जो पहलवान थे रवि दहिया, उन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया, देश का गौरव बढ़ाया। आज पूरा देश बहुत खुश है। तो हमारी तरफ से बधाई, हमारी तरफ से मतलब जनता की तरफ से, और ये बधाई बिल्कुल सच्ची है, ओरिजिनल है, शुद्ध बधाई है। हाँ, क्योंकि हम लोग जनता हैं, और हम लोग क्रेडिट जीवी थोड़ी हैं जो क्रेडिट लेने के लिए बधाई दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब किसी के सुख दुख में नहीं पहुंचेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहीं कोई परेशान है, दुखी है, चुप बैठे रहेंगे, गायब रहेंगे, कोई हार जाएगा, छिपे बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोई जीत हासिल करता है या कहीं से कुछ चमक दिखाई पड़ती है, ये तुरंत बधाई का टोकरा लेकर के क्रेडिट लेने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। हमने अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया, हमने देख रहे भाई साहब, मतलब जो खिलाड़ी जीते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और ये हमने तुरंत आगे आ जाते हैं। भाई हमने, ये तो बताओ मिस्टर हमने, कि आपने किया क्या है जो क्रेडिट लेने आते हो? क्या किया है मतलब इन खिलाड़ियों के लिए? इनका बेचारों को जो दूध और ब्रेड का, बिस्किट का जो पैसा था, खेल का बजट 230 करोड़ रुपए, वो भी आपने काट लिया।
लेकिन क्रेडिट लेने के लिए तुरंत आगे आ गए। हॉकी टीम, बताइए, अदानी और अंबानी को होते हुए हॉकी टीम को स्पॉन्सर तक नहीं दिलवा सके, लेकिन हमने क्रेडिट लेने के लिए तुरंत आगे आ गए। क्योंकि अमित शाह के बेटे जय शाह जो हैं वो हॉकी टीम में थोड़ा किसी तरह का कोई योगदान दे रहे हैं। जय शाह कहां योगदान दे रहे हैं? वो बीसीसीआई में हैं, आईपीएल में दिखाई देते हैं, हॉकी के किसी मैच में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर क्रेडिट दिया जाना चाहिए दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ इस शख्स नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम बीजेपी सरकार कर रही है। अगर आपको बीजेपी सरकार की हकीकत जाननी है दोस्तों तो आपके सामने यह खबर। इन ओलंपिक ईयर स्पोर्ट्स बजट कट बाय 230 करोड़। एक तरफ जहां हॉकी में उड़ीसा की सरकार 150 करोड़ की मदद हमारी हॉकी टीम्स को देती है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दोस्तों भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने स्पोर्ट्स बजट 230 करोड़ से कम कर दिया था। अब ये लोग क्रेडिट लेने की बात करते हैं। किस मुंह से ये लोग क्रेडिट लेने की बात करते हैं? दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह बयान देखिए। जुमा 20 दिन हुए इन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हुए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पीवी सिंधु जो ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और भारतीय महिलाएं जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं ओलंपिक के अंदर, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। उसकी हकीकत मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। दोस्तों पूरा गोदी मीडिया मानो लग गया है इन जीतों के लिए मोदी सरकार को क्रेडिट देने के लिए। अभी हाल ही में एक चैनल शुरू हुआ है जिसका नाम है टाइम्स नाउ नव भारत। मैं आपको 20 सेकंड की एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा। इस इंटरव्यू में इन्होंने चाटुकारिता की तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों, देखिए खुदा। नमस्कार अनुराग ठाकुर जी, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं ऐतिहासिक दिन पर। ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है और पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की। मैं आपको बता चुका हूं, हॉकी में अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा सरकार को। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि इन्होंने स्पोर्ट्स बजट जो है 230 करोड़ रुपए कम कर दिया था। तो हम मोदी सरकार को इन जीत के लिए कैसे क्रेडिट दे सकते हैं? और सबसे अजीबोगरीब बात आपने सुना, अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसी का परिणाम है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, महिला खिलाड़ी। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पीवी सिंधु जो है ना, पीवी सिंधु ने अपना करियर की शुरुआत की थी साल 2009 में। ये देखिए साल 2009 में, उस वक्त वो सिर्फ 14 साल की थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर दूर तक नहीं थी और 2009 से उन्होंने देश का नाम रोशन करना शुरू किया। अब क्या आप उसके लिए भी क्रेडिट लेना चाहेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। और अगर आपको लगता है कि बेटी बचाओ बेटी Folks, back. Obviously, it was a good Olympics for India. It's as Tokyo turned around a bronze that heralds hope for a new golden age. I doubt that very much without effort. Golden spearhead definitely, and he's got a long way to go. He's young. These athletes that are throwers and short putters, etc., actually get their best time between 28 and 35. History scripted. PM leads nation in hailing golden boy. Well, that's the challenge for us all, right? Bronze worth the weight in gold. So here I want to say one quick thing. You know, whenever we make excuses for coming second, coming third, right? Or for losing, we did our best kind of thing. We kind of lose the necessary verve that is necessary going into the future to win. That's the problem that I think I have with this, right? But while this is happening, you know, Beti Bachao, Beti Padhao, all that stuff, 2 men arrested for castious slurs on Vandana's kids. And the reality is, what I worry about is the hogging up of the limelight by the Pradhan Sevak and the credit, as if he is the reason why everybody's won the gold. And nothing could be further from the reality. Reality is they cut the budgets down from 230 crores, denying these athletes during the toughest time the necessary stuff that they needed. These obscene ads that you're seeing, that is dummy, full ad thanking Pradhan Sevak, okay? And what about this one? Renaming the Rajiv Gandhi Ratna Award for Dhyan Chand. Great stuff, but the ad, obscene. You have the Dadiwala Baba standing there. Dhyan Chand is not to be seen. And I'm told that the medal that's put up there is the Paramveer Chakra. How shameful can that be, right? Congratulations and advertising, right? This is what I thought was that funny, you know, shameful self-promotion. You had this video of him, calling the captain of the Indian hockey team, congratulating him. That side doing the round. And it was sad to see it on my group showing up there. Do I care? Why would I care that
Prime Minister's taken the time off to talk to the hockey team. He doesn't take time off to do anything else. But how credit immediately. But this is the sickness of it all, right? Then the other Sindhu's parents thanking on TV, thanking Modi. Why are they thanking Modi? But what it shows you is the total control of the Mai Baap Sarkar over these sports bodies. As long as that continues to happen with all these useless politicians controlling these bodies, and including the BCCI, where Shah's son has taken control because of Shah's obviously use of Pegasus, right? This is why we go wrong. These bodies now should be given to the private sector, whether hockey or whatever, to the Tatas, to the Reliance, and tell them, guys, you funded and produced the necessary people, right? And a hockey coach thanking the Prime Minister, but he also knows his position depends on thanking the Prime Minister for the motivational talk. If that occasion doesn't motivate you, the Prime Minister definitely can't. And Anurag Thakur actually saying that the Beti Bachao thing is because of that these women are now winning the gold. Is he for real? Is he for real? At the same time, you've got a Dalit girl who gets butchered in this place. Is he for real? Sports Mirabai Chanu thanks the real, and where finally Mirabai Banu thanks the real helpers, which are the truck drivers, and thank God she didn't have a word to say about the Prime Minister. More later. An Olympic silver medalist, Mirabai Chanu's village was more than 25 kilometers from the Sport Academy in the state capital of Imphal. She didn't have enough money to travel there every day, and she used to hitchhike, she used to hitch a lift in trucks which carried river sands to Imphal. The truckers near her village gave her a lift almost every day for several years. Yesterday she facilitated these truck drivers. 150 truck drivers and helpers were in fact invited. She gifted them a shirt, a Manipuri scarf and a full course Manipuri lunch. She broke down in gratitude. She said that these truckers had been there for her, and they all played a key role in her becoming a weightlifter. She said if it hadn't been for them, her dream would never have been fulfilled. And quickly to end the reality, what does Anju Bobby George write? Tokyo was better than Rio, but still nothing close to what we hoped for. Can India break into the top 10 in the Olympics by 2040? Only with a lot of effort and taking away these sports bodies from politicians. If we stop settling for mediocre, India can surely be a top sporting nation, being mediocre. What does Ayaz Menon write? A nation that is entitled and makes excuses is not one committed to sport. Then, what do we have here? Not Sare Jahan Se Acha, as Kala says, Sridhar writes. GOI spends 3 paisa per day per capita on sports. By contrast, China spends an estimated 316 billion yuan, which is rupees 6.10 per capita per day. Look at the difference. One other major problem in sports management in India is the lopsided emphasis on cricket. Hence, Jai Shah, our athletes try hard. But there is no doubt that we have to increase the financial space for sporting both at the municipal and national levels. The sports curriculum has to be overhauled in such a way that it is attractive and interesting for the students to enroll in such programs. Absolutely, folks. And there lies the real story. Jai Hind.